Jayani Heno Prabhu Kota Gela Acharya Thakur Heno Prabhu Kota Gela Acharya Thakur Heno Prabhu Kamora Swarup Rupa Kaha Sanatan Kamora Swarup Rupa Kaha Sanatan Kada Saragonata Pratisapama Kada Saragonata Pratisapama Kamora Bhatta Jula Kaha Kabira Kaha Mura Bhatta Yuja Kaha Kabira Ekakale Kota Gela Gaura Natara Ekakale Kota Pashane Kutibo Mata Anale Pasibo Pashane Kutibo Mata Anale Pasibo Goranga Gunera Nidhi Kotha Gile Pabo Goranga Gunera Kotha Gile Pabo Se Sab Sanghira Sanghe Jai Koilo Vila Se Saba Sangira Sanghe Se Sangana Paiya Kande Narottamada Se Sangana Paiya Jai Anilo Premadana Karuna Prachur Jai Anilo Premadana Eno
Prabhu Kota Gila Charitakur. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo, 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 Divine Grace Sharanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON founder, PBT founder Srila Prabhupada Ki Sripad Madhavendra Puri Ki Sri Chaitanya Charitamrita Ki Srila Krishna Das Kaviraj Goswami Ki Bhakti Vedanta Purports Ki Ananta Koti Vaishnava Vranda Ki. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees.
All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Sri Gauranga Guru Premanande Hari Hari. So my name is Bhakti Brihad Bhagavat Swami. मेरा नाम है समाज बोलते हैं भक्ति प्रिय ठाकुर स्वामी His name is sannyasi. I joined ISKCON in 1983, which is about 42 years ago. मैं इस इस्कॉन संस्था में 1983 में जुड़ा Okay. था जो कि आज से 42 साल पुराना है। Is the sound okay? आपका आवाज सुनाई दे रही Good. Oh, she speaks English. she's saying good or doing this yes. So the sound man should improve it. Is better now? Good? अभी ठीक है महाराज Hare Krishna. Good. So today marks the anniversary disappearance of Sripada Madhavendra Puri, आज श्रीपाद माधवेंद्र पुरी का तिरुभाव दिवस है whose dear disciple is Srila Ishwar Puri, जिनके प्रिय शिष्य हैं श्री ईश्वर पुरी and Ishwar Puri is the spiritual master of Sri Chaitanya Mahaprabhu. और श्री ईश्वर पुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं So Madhavendra Puri is the Param Guru of Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो माधवेंद्र पुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु हैं So today we'll read one verse which is on the board from Sri Chaitanya Charitamrita. तो आज हम श्री चैतन्य चरितामृत से एक तैयार देखेंगे जो बोर्ड पर लिखा हुआ है You can repeat after me. आप सभी मेरे लिए उच्चारण कर सकते हैं Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Sri Chaitanya Charitamrita Madhyalila, श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा Chapter 4, entitled Sri Madhavendra Puri's Devotional Service. अध्याय 4 जिसका शीर्षक है श्री माधवेंद्र पुरी की भक्ति Text number 197. श्लोक 197 You can repeat after me. आप लोग भी उच्चारण कर सकते I
दीन दयाद्रनाथ है। मथुरनाथ कदवलोक्ष से हृदयं त्वद् आलोककातरम् दयिता विरम्यति किं करोम्यहम्। Can chant? Mataji. Right. So you can read the translation and the purport in Hindi. No, just read the translation. अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रकाशमूर्ति अद्वैत नारायण वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की अनुवाद। हे नारायण, हे परम कृपालु स्वामी, हे मथुरापति, मुझे फिर आपके दर्शन कब होंगे? आपका दर्शन न कर पाने के बाद मेरा विशुद्ध हृदय अस्थिर हो चुका है। हे प्रिय, अब मैं क्या करूं? तात्पर्य: केवल वेदांत दर्शन पर आश्रित शुद्ध भक्त चार संप्रदायों में विभक्त है। इन चारों संप्रदायों में श्री मध्वाचार्य संप्रदाय को माध्यम पुरी ने स्वीकार किया था। इस प्रकार उन्होंने परंपरा अनुसार संन्यास ग्रहण किया। मध्वाचार्य से लेकर माध्यम पुरी के पूर्व आचार्य लक्ष्मीपति तक माधुर्य भक्ति की अनुभूति नहीं थी। श्री माध्यम पुरी ने ही मध्वाचार्य संप्रदाय में सर्वप्रथम माधुर्य रस की भावना का सूत्रपात किया। मध्वाचार्य संप्रदाय का यह निर्णय श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा तब प्रकट किया गया जब वे दक्षिण भारत की यात्रा करते हुए उन तत्ववादियों से मिले थे जो मध्वाचार्य संप्रदाय के माने जाते थे। जब श्री कृष्ण ने वृंदावन छोड़कर मथुरा का राज्य स्वीकार कर लिया, तब श्रीमती राधा रानी ने विरह भाव के आवेश में दिखाया कि विरह में कृष्ण से किस तरह प्रेम किया जा सकता है। इस तरह इस श्लोक में विरह भाव में विप्रलंब भाव में भक्ति प्रदान है। गौड़िया मध्व संप्रदाय में विरह भाव में पूजा को सर्वोच्च भक्ति मानी जाती है। इस धारणा के अनुसार भक्त अपने आप को अत्यंत दीन तथा भगवान द्वारा उपेक्षित मानता है, अतः वह भगवान को दीन दयाल का नाम कहकर पुकारता है, जैसा कि मानव ने किया। ऐसी भावना बुद्धिपूर्ण भक्ति का सर्वोच्च रूप है। श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे, अतः श्रीमती राधा रानी अत्यधिक व्यथित थी और उन्होंने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए: हे प्रभु, आपके विरह के कारण मेरा मन अत्यधिक शुद्ध हो गया है। अब आप ही बताएं
चैतन्य महाप्रभु सदैव श्रीमती राधा रानी की उन्हीं भाव को व्यक्त करते थे जिन्हें राधा रानी ने वृंदावन में उद्धव को देखकर प्रकट किए थे। महादेव पुरी द्वारा अनुभव किए जाने वाले ऐसे ही भाव इस श्लोक में व्यक्त हुए हैं। इससे गौड़ीय मध्व संप्रदाय के वैष्णव के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्राकट्य के समय जिन भावों का अनुभव किया वे महादेव पुरी से श्री ईश्वर पुरी के माध्यम से उनकर आए। गौड़ीय मध्व संप्रदाय परंपरा के सारे भक्ति के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। ओम ज्ञान अखिवेदान्तस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकं वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। The few verses before this verse in text 193. इस श्लोक से कुछ श्लोक पहले श्लोक 1993 में Go to text 193. Now read the translation. जिस प्रकार रत्नों में कौस्तुभ मणि को अत्यंत मूल्यवान माना जाता है, उसी तरह भक्ति के रस से संबंधित काव्य में इस श्लोक को सर्वोत्तम माना जाता है। Now read text 194 translation. वास्तव में इस श्लोक को श्रीमती राधा रानी ने स्वयं कहा था और उनकी कृपा से ही ये महादेव पुरी के शब्दों में प्रकट हुआ। Now text 195. केवल श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक के काव्यत्व का आस्वादन किया है। Purport. इसका अर्थ ये हुआ कि इस श्लोक के तात्पर्य को केवल श्रीमती राधा रानी, माधवेंद्र पुरी तथा चैतन्य महाप्रभु ही समझने में समर्थ हैं। Text 196. पृथ्वी पर जीवन के अंतिम काल में माधवेंद्र पुरी इस श्लोक को बार-बार पढ़ते रहे। इस प्रकार इस श्लोक का उच्चारण करते करते उन्होंने जीवन का चरम लक्ष्य पाया। This particular sloka is the best sloka, just as the Kaustubha Mani is the best jewel. जिस प्रकार कस्तूर मणि सबसे अच्छे मणि हैं, उसी प्रकार ये श्लोक सबसे अच्छा है। And this is the actual verse that Madhavendra Puri was not reciting, but was feeling before he left us. तो ये जो श्लोक है, ये माधवेंद्र पुरी केवल इसका उच्चारण नहीं कर रहे थे, परंतु इसके भाव का आस्वादन भी कर रहे थे अपना देह त्याग के समय। In the last stage of Madhavendra Puri's life, माधवेंद्र पुरी के जीवन के अंतिम he was completely invalid. In other words, everything needed to be done for him. वो उस अवस्था में थे कि वो खुद से स्वयं कुछ नहीं कर पा रहे थे, किसी और को प्रेरित करना पड़ता। He was on the floor, but he could not move. वो जमीन पर लेटे रहते थे और हिल नहीं पाते थे, उठना सुना नहीं सकते। So his dear foremost disciple Srila Ishwar Puri did everything for him, including feeding him,
bathing him, cleaning up after he passes stool and urine. तो उनके सबसे प्रिय शिष्य ईश्वरपुरी ने उनके लिए सब कुछ किया, उनको भोजन कराना, उनको नहलाना, जब वो मल मूत्र का त्याग करते थे तो सफाई करना। And simultaneously, Madhavendra Puri was hearing the Hare Krishna Maha Mantra from Ishwar Puri while he was serving him. और जब ईश्वरपुरी उनकी सेवा कर रहे थे तो बहुत बार ऐसा होता था कि माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी के मुख से हरे कृष्ण महामंत्र सुनते थे। And Srila Prabhupada says that amongst all the disciples of Madhavendra Puri, which also includes Srila Advaita Acharya as his disciple, Ishwara Puri gave the best service to his spiritual master. और श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्री माधवेंद्रपुरी के समस्त शिष्यों में जिनमें से एक श्रीला अद्वैत आचार्य भी थे, श्रीला ईश्वरपुरी ने अपने गुरु महाराज को सबसे अच्छी सेवा दी। Sripad Madhavendra Puri was so pleased with Srila Ishwara Puri. He said, I can only bless you with one blessing. और श्री माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने कहा कि मैं आपको एक ही कृपा वचन दे सकता हूँ। And he said that just as you are pleasing me, my dear boy, I am praying to Krishna that he will also be pleased with you. तो उन्होंने कहा कि हे मेरे प्रिय बालक, जिस प्रकार तुम मेरी सेवा कर रहे हो, मुझे प्रसन्न कर रहे हो, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान कृष्ण भी आपसे उसी प्रकार प्रसन्न हो जाए। And then Srila Prabhupada quoted the verse, Yasya prasada bhagavat prasada, Yasya prasada nagati kutopi. और फिर श्री प्रभुपाद जी ने श्लोक का उच्चारण किया, यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद, यस्य प्रसाद नंद। That by the mercy of the spiritual master, one is blessed with the mercy of Krishna. कि जब गुरु की कृपा प्राप्त होती है तो फिर भगवान श्री कृष्ण की भी कृपा प्राप्त हो जाती है। So without the mercy or grace of the spiritual master, one cannot make any advancement to receive the mercy of Krishna. तो बिना गुरु के कृपा के हम भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते और भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। A Vaishnava or a devotee is always protected by Krishna. एक वैष्णव की भगवान श्री कृष्ण हमेशा सुरक्षा करते हैं। But if he appears to be incapacitated or invalid and cannot do anything on his own, it is a chance that is given to the disciples to serve him. लेकिन जब वैष्णव ऐसी अवस्था में होता है कि वो स्वयं कुछ नहीं कर पाता, तो उस समय शिष्यों के पास अवसर होता है कि वो उस वैष्णव के गुरु की सेवा करें। That is why even in our Vedic culture, and it is well known in Bharata Bhumi here, that if you take care of the elders, it's one of the greatest blessings that you can receive in life. इसलिए भारत भूमि में जहाँ पर वैदिक संस्कृति है, ये माना जाता है, ये लोग जानते हैं कि अगर आप जिन लोगों की सेवा करते हो तो आपको उससे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है, कम मिलता है। And that is a very feeling of affection and security for the elders, that my sons and daughters will still take care of me when I'm old. It's a feeling of security and affection. And then you receive blessings like that when you take care of the elders. तो जब वृद्धों की इस प्रकार सेवा होती है उनके पुत्रों द्वारा, तो जो वृद्ध होते हैं उनको भावना मिलती है, स्नेह की भावना का अनुभव होता है और सुरक्षा की भावना का अनुभव होता है, इससे वो कृपा भी प्रदान करते हैं। And Srila Prabhupada said that Ishwara Puri pleased Sripad Madhavendra Puri so much that he became such a great personality that Lord Chaitanya accepted Ishwara Puri as his spiritual master. God himself. श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि श्रील ईश्वरपुरी ने श्री माधवेंद्रपुरी को अपनी सेवा से इतना प्रसन्न किया कि भगवान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री ईश्वरपुरी को गुरु के रूप में स्वीकार किया। So, in this particular verse that is on the board today, when Sri Chaitanya Mahaprabhu recites this famous verse,
He recited it because of Sripad Ishwar Puri's service to Madhavendra Puri. तो ये जो श्लोक बोर्ड पर लिखा है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु उच्चारण करते थे, लेकिन वो उच्चारण इसलिए कर पाए क्योंकि श्री ईश्वर पुरी ने श्री माधवेंद्र पुरी की सेवा की। And Srila Krishnadas Kaviraj Goswami says that this verse is just like the moon because it spreads illumination, it brightens up everything in a very cooling way. श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये जो श्लोक है ये चंद्रमा के समान है, क्योंकि ये बहुत ही ठंडी किरणें प्रदान करता है और सभी विषयों को प्रकाशित कर देता है। So actually this particular verse emanated from the lotus mouth of Srimati Radharani directly when Krishna left Vrindavan to go to Mathura. तो ये जो श्लोक है ये श्रीमती राधारानी के मुख से प्रकट हुआ जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। And Srila Prabhupada says, by the mercy directly of Srimati Radharani, Madhavendra Puri absorbed this verse in his consciousness, and therefore it naturally came out at the time of his leaving us. और श्रीमती राधारानी की कृपा से श्रील माधवेंद्र पुरी ने इस श्लोक को अपनी चेतना में पूरी तरह से बसा दिया, और जब वो अपना देह त्याग करने वाले थे उस समय ये उनके मन में प्रकट हो गया। And because Sri Chaitanya Mahaprabhu is in the consciousness of Radharani feeling her love for Krishna, only these three personalities are capable of entering into the consciousness of this verse. क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधारानी के भाव में आए हैं, इसलिए वो माधवेंद्र पुरी और श्रीमती राधारानी ये तीन ही एकमात्र इस श्लोक के भाव में प्रवेश कर सकते हैं। So even if we discuss this verse today, we cannot really enter into its consciousness because only three persons can enter. And also not even Krishna himself can enter into this verse. हालांकि हम इस श्लोक पर आज चर्चा कर रहे हैं, लेकिन केवल ये तीन व्यक्ति ही इस श्लोक के भाव में प्रवेश कर सकते हैं। भगवान कृष्ण भी स्वयं इस श्लोक के भाव में प्रवेश नहीं कर सकते। So Krishna himself requested various devotees to precede his appearance as Chaitanya Mahaprabhu. And Srila Krishna's Kaviraj Goswami names them. भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने भक्तों से अनुग्रह किया था कि वो श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य होने से पहले स्वयं को प्रकट करें, और उनके नाम श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं। So as Krishna, he requested Mother Sachi and Jagannath Mishra to go first. कृष्ण भगवान ने माता सची और जगन्नाथ मिश्र से निवेदन किया कि आप पहले जाएं। And then he requested Madhavendra Puri to go. फिर उन्होंने माधवेंद्र पुरी से निवेदन किया। Then Keshava Bharati, Ishwar Puri, Advaita Acharya. केशव भारती से, ईश्वर पुरी से, अद्वैत आचार्य से, Then Srivas Pandit, शिवास पंडित से, Acharya, Ratna, and Vidyanidhi and Haridas Thakur. आचार्य रत्ना विद्यानिधि हरिदास ठाकुर से। So they are all senior to Chaitanya Mahaprabhu's appearing. तो वह सभी श्री चैतन्य महाप्रभु से वरिष्ठ हैं। Now in the Gaur Gunadash Dipika, according to Srila Kavi Karnapur, Madhavendra Puri is a very special personality in Krishna Lila. गौरव कर्ण इस दीपिका में श्री कवि कर्णपुर कहते हैं कि माधवेंद्र पुरी कृष्ण लीला में बहुत ही विशेष व्यक्ति हैं। And I'll read the evidence of the verse from the Chaitanya Charitamrita later on. I'll give the evidence of that from Chaitanya Charitamrita later on. और चैतन्य चरितामृत में बाद में इसका प्रमाण भी दूंगा। So in the mornings when we sing Nikunj you know Radhikali Sidhai Yayalu Bir Yuktir Apexania. सुबह जब हम ये पद गाते हैं, Say Nikunj you know. निकुंज युलो और ये सिद्धियाँ यानी Yuktir Apexania. युक्ति अपेक्षित।
So, how many of you have been to Sevakunj in Vrindavan? आप में से कितने लोग वृंदावन में सेवा कुंज में गए? You been? Okay. Yeah. So the kunj is what is called a bawa. Bawa means where the uh, tree, it touches the ground with its branches and it makes a kunj, like a bit of a cave, bawa. तो निकुंज का क्या होता है कि एक वृक्ष अपनी शाखाओं से जमीन का स्पर्श करके एक गुफा जैसा बना लेते हैं। So, so before the kunj becomes a bawa like that, the branches, the newly grown leaves automatically fall onto the ground. तो जब वो वृक्ष एक कुंज बनने के प्रक्रिया में होता है, तो जो नई पत्तियां हैं जिनका जन्म होता है वो वृक्ष से गिर के जमीन पर आ जाती हैं। And then the flowers fall on the leaves. और फिर उन पत्तियों पर फूल गिर जाते हैं। So it makes a cushioned, flowery, so-called bed. तो फिर उससे एक बहुत ही कोमल सा खुशबू का स्तर लग जाता है। So this is called a Nikunja, like a place where Radha Krishna enter. तो इसे निकुंज कहते हैं, एक स्थान जहाँ पर राधा कृष्ण लीला करते हैं। But before we go further with that, we have to understand one thing. लेकिन हम उससे पहले कुछ और समझने की कोशिश करें। So in the Chaitanya Charitamrita, in the Adilila chapter 4, text 96 now, there's a verse, chapter 4, text 96. You got it there? Oh, no, you don't have the Adilila with you. That's fine. चैतन्य चरितामृत अध्याय 4 श्लोक 96 में It says, Radha Purna Shakti, Krishna Purna Shakti Mam, Dohi Vastu Bedanahi Shastra Paraman. And the translation is that Srimati Radharani is the full power and Lord Krishna is the possessor of full power. श्रीमती राधा रानी पूर्ण शक्ति है और भगवान श्री कृष्ण पूर्ण शक्तिमान हैं। The two are not different, as is evidenced by the revealed scriptures. और जैसा कि वेदिक ग्रंथ में प्रमाणित है, दोनों में कोई भेद नहीं है। And then Srila Krishnadas Kaviraj Goswami gives two analogies to make this clear. और फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी दो उपमाएं देते हैं इसको स्पष्ट करने के लिए। In the next verse of the chapter 4, text 97 in the Adilila. तो अगले श्लोक में 97 और 98 में इसको पुष्टि करते हैं। So he says, Mirgamada Taraganda. In other words, Mirgamada means musk, and Ganda means it gives a fragrance. कस्तूरी और उसका गंध। And then it says, Yaichi Avi Cheda. You cannot separate the fragrance from the musk. It's inseparable. आप कस्तूरी से उसकी गंध अलग नहीं कर सकते हो। And the other analogy he gives is Agni Jwalate. Agni Jwalate means fire. Yachi Kabunahi. In other words, fire gives heat and light, and you cannot separate the heat and light from fire. अग्नि जो है वो गर्माहट और प्रकाश प्रदान करती है। तो इस गर्माहट को और प्रकाश को आप अग्नि से अलग नहीं कर सकते। So just as musk and the scent is inseparable, or as fire is inseparable from the heat, it's not different. जैसे कि कस्तूरी और गंध को अलग नहीं किया जा सकता और अग्नि और उसकी गर्माहट को अलग नहीं किया जा सकता। But there is some difference. लेकिन भेद भी तो है। Because musk gives fragrance, but it cannot experience its own fragrance. भेद क्या है कि कस्तूरी गंध देता है
लेकिन कस्तूरी उस गंध का स्वाद नहीं हो सकता। And the origination of heat and light comes from the fire, but fire cannot experience heat and light. अग्नि से प्रकाश और गर्माहट आती है, लेकिन उस गर्माहट और प्रकाश का अनुभव अग्नि नहीं कर सकती। So similarly, Radha comes from Krishna, but Krishna cannot experience Radha's love for Krishna. Same thing. हालांकि श्रीमती राधा रानी कृष्ण से आती है, लेकिन कृष्ण जो राधा रानी का कृष्ण के लिए प्रेम है उसका आस्वादन नहीं करता। But here's an important principle that just as the fragrance cannot be separated from the musk and heat and light cannot be separated from fire, Radha cannot be separated from Krishna. It's inseparable. लेकिन एक और बात समझने की ये है कि जैसे कि गंध कस्तूरी से अलग नहीं हो सकता, गर्माहट और प्रकाश अग्नि से अलग नहीं हो सकते, उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी कृष्ण से अलग नहीं हो सकती। In the material world, there is boy and girl, there is male and female, there is husband and wife, there is mother and father. They are always separated. इस भौतिक जगत में लड़का लड़की, स्त्री पुरुष, पति पत्नी, माता पिता, इनके बीच में हमेशा भेद आ जाएगा या फिर Even if they come together for union, they separate after that. It's temporary. यहाँ पर वो मिलन करना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, कुछ समय बाद में अलग हो जाते हैं। So we cannot attribute our material experience to Radha Krishna. तो इसलिए हम अपने भौतिक अनुभव को राधा कृष्ण के संबंध में नहीं लगा सकते। So Krishna is not the supreme male and Radharani is not the supreme female. There's no male and female there. ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण परम पुरुष हैं और श्रीमती राधा रानी परम स्त्री है। वहाँ पर पुरुष और स्त्री ये बात नहीं है। Just as the fragrance is inseparable from musk and heat and light is inseparable from fire, there's no gender of male and female. There's no gender. जैसे कि गंध को कस्तूरी से अलग नहीं किया जा सकता या गर्माहट को प्रकाश को अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता, यहाँ पर कोई लिंग की चर्चा नहीं हो रही। That is called the supreme pure. तो उसको परम शुद्ध कहा जाता है। And one can only realize that is what if one is free from the bodily conception of life. और इस बात को व्यक्ति तभी समझ सकता है, अनुभव कर सकता है जब वो शारीरिक चेतना से मुक्त हो। If one is not free from the bodily conception of life, then one will see Radha Krishna just as you have relativity of the material world and material experience. It's not pure. You can't see with purity. तो जब हम शारीरिक चेतना में होते हैं, हम राधा कृष्ण को अपने भौतिक अनुभव और अपने भौतिक दृष्टिकोण के अनुसार ही समझते हैं। And I will explain how pure that is. और अभी हम समझाएंगे कि ये कैसे कितना शुद्ध है। So when Radha Krishna, it's not Radha and Krishna. राधा कृष्ण का ये नहीं है, राधा और कृष्ण। We say Shri Shri Radha Giridhari. We don't say Shri Shri Radha and Giridhari. We don't say that. हम बोलते हैं श्री श्री राधा गिरिधारी, हम नहीं बोलते श्री श्री राधा और गिरिधारी। But in the material world, when two people get married, they say, Laddu is marrying somebody. Laddu is and, the word and is there. लेकिन भौतिक जगत में Laddu and Gulab Jamun are getting married. लेकिन हम भौतिक जगत में उदाहरण देते हैं कि लड्डू का उससे विवाह हुआ। The word and is there. लड्डू और गुलाब जामुन का विवाह हुआ। It's temporary. तो और शब्द का मतलब क्या है? ये शाश्वत नहीं है, अशाश्वत। And this married life doesn't last very long. Maybe 30, 40, 50 years. Now it doesn't even last few months. और ये वैवाहिक जीवन है, ये ज़्यादा नहीं चलता, 30 साल, 40 साल, 50 साल, आजकल तो कुछ महीने ही चलता है। But with Radha Krishna, not Radha and Krishna. No and. तो यहाँ पर राधा कृष्ण है, राधा और कृष्ण नहीं, और नहीं।
So Radha Shama Sundar, they enter at Seva Kunj, into this Kunj. तो राधा श्याम सुंदर सेवा कुंज में प्रवेश करते हैं इस कुंज में। So when they enter the Kunj, then the Kunj becomes Nikunja Yuno, Ratikeli. Ratikeli means so much pastime is in one place, in the Kunj. तो जब वो कुंज में प्रवेश करते हैं तो वो निकुंज बन जाता है। निकुंज यूनो रति केली मतलब वहाँ पर उस स्थान पर बहुत सारी लीलाएं हैं। So the Kunj completely covers the branches after it sheds its newly grown leaves and then sheds its flowers to make a bed. The branches cover. That's called a Kunj. तो जैसा कुंज के बारे में बताया गया कि जो शाखाएं हैं उसमें से पत्तियां गिर जाती हैं, उसके ऊपर फिर फूलों का परत आ जाता है और वो जो शाखाएं हैं वो चारों तरफ से घेर लेती हैं And the branches touch the ground. और जो शाखाएं हैं वो जमीन का स्पर्श करती हैं। Then the branches intertwine and they become very tight. और जो शाखाएं हैं वो आपस में रस्सी की तरह एक दूसरे की तरफ घूमकर बहुत ज्यादा कड़क हो जाती हैं। Because the flowers from that tree are self-illuminating. There's no need for moonlight, sunlight, and even air or vayu cannot enter there. तो इस प्रकार होता है जो फूल गिरे हैं वो स्वयं प्रकाश प्रदान करते हैं, तो इसलिए चंद्रमा की किरणों की, सूर्य की किरणों की आवश्यकता नहीं है और वो इतना वैसा प्रबल बन जाता है कि वायु भी प्रवेश नहीं कर पाता। No demigod can go there, or Devi, or demigoddess. तो कोई देवता या देवी वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। There's only one witness केवल एक साक्षी हो सकता है who knows what's happening in the Kunj. जो जानता है कि कुछ नहीं होता है। And who is that? और वो साक्षी कौन है? Raise your hand. Oh. Huh? Not even Rupa and Rati Manjari can go there. रूप और रति मंजरी भी वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। Not even Vrindadevi. वृंदा देवी तो मालूम। It's a good educated speculation. ऐसा बोल। Educated speculation. तो ये बहुत ही प्रशिक्षित रूप से किया हुआ वो है। At least he's remembering Vrindadevi. मानसिक चिंतन है। Who's the only witness? He says the spiritual master. No. इन्होंने कहा गुरु महाराज नहीं। The spiritual master is endowed with Ladini Shakti, which is Radharani's mercy that comes with this. That's different. Mata? Repeat what she said. She's right. माता जी ने कहा कि जो निकुंज का वो वृक्ष है जिसकी डालियां जमीन का स्पर्श कर रही हैं शाखाएं। The only witness is the Kalpa Vriksha tree. The Kalpa Vriksha tree, Nikunja, making the एक ही साक्षी है। making the bower. कौन? वो कल्प वृक्ष जिसने वो निकुंज बनाया। Clear? Nobody else. और कोई नहीं प्रवेश। So there's the evidence from Chaitanya Charitamrita, Adi Leela, chapter 9, text 9 and 10. तो आदि लीला चैतन्य चरितामृत से श्लोक 9 और 10 में से है प्रमाण। And it says here, Jaya Shri Madhava Puri Krishna Prema Pura Bhakti Kalpa Tarura Tenho Pratama Ankura. And the translation. All glories to Sri Madhavendra Puri, the storehouse of all devotional service unto Krishna. श्री माधवेंद्रपुरी की जयकार हो जो कि कृष्ण प्रेम के खान। He is a desired tree of devotional service
And it is in him that the seed of devotional service first fructified. वो अ, भक्ति के कल्प वृक्ष हैं और उनमें अ, भक्ति का जो बीज है वो सबसे पहले अंकुरित होता है। So when Madhavendra Puri disappeared on the anniversary of this day, he goes back to his original nature as the root of all Kalpa Vriksha trees in Vraj Mandala. तो जब माधवपुरी अप्रकट होते हैं तो वो फिर से अपने स्वरूप में चले जाते हैं जो कि जितने भी कल्प वृक्ष हैं ब्रज में उसका जड़ है। So according to Gaur Ganadas Dipika by Srila Kavi Karnapur, Madhavendra Puri's service and Madhavendra Puri's form is the principal Kalpa Vriksha tree in Krishna Lila. तो गौरव गणदेव दीपिका में श्रील कवि गणपुर कहते हैं कि माधवेंद्रपुरी का जो स्वरूप है वो कल्प वृक्ष है। And therefore that Kalpa Vriksha trees are the only witness to Radha Krishna Lila. और वो जो कल्प वृक्ष है वही एकमात्र साक्षी है राधा कृष्ण की लीला। Nobody else. और कोई नहीं। That's the special position of Sripad Madhavendra Puri. तो ये श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का विशेष पद है स्थान। Now, I did some research to find out who Srila Ishwar Puri in Krishna Lila. फिर मैंने कुछ शोधन किया कि श्री ईश्वरपुरी कृष्ण लीला में कौन है। And the Goswami's literature doesn't mention it. तो गोस्वामियों के जो ग्रंथ है उसमें इसका वर्णन नहीं है। Whether it's Srila Rupa Goswami in Radha Krishna Ganadas Dipika or Gaur Ganadas Dipika, it does not mention it. श्री रूप गोस्वामी राधा कृष्ण गण देव दीपिका में बताते नहीं हैं और गौर गण देव दीपिका में इसका वर्णन नहीं है। But I was very determined to still find it. लेकिन फिर भी मैं बहुत ही दृढ़ता के साथ ये खोजना चाहता। It took me 2 weeks मुझे 2 सप्ताह लगे of intense research and meditation to find who's Ishwar Puri. Not mention it. बहुत दृढ़ मैंने शोधन किया ध्यान किया ये पता करने के लिए ईश्वरपुरी। Then finally the evidence was glaring in front of me in the next verse in Chaitanya Charitamrita. और फिर अगले ही श्लोक में चैतन्य चरितामृत में मुझे प्रमाण मिला। So in Adi Leela chapter 9, text 9 and 10, it tells you that Madhavendra Puri is the desired tree of devotional service. चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 9 श्लोक 9 और 10 में माधवेंद्रपुरी के बारे में बताया गया है कि वो कल्पवृक्ष हैं। And the next sloka, text 11, that follows, I'll read. Shri Ishwara Puri Rupe Ankura Pushta Haila. Ishwara Puri Rupe, form, you know. Shri Ishwara Puri Rupe Ankura Pushta Haila. Apana Chaitanya Mali Skanda Upajila. Another translation. The seed of devotional service next fructified in the form of Sri Ishwara Puri. तो चैतन्य चरितामृत अध्याय 9 आदि लीला अध्याय 9 श्लोक 11 में बताया गया है कि फिर जो भक्ति का बीज है वो फलित हुआ श्री ईश्वरपुरी के रूप में। And then the gardener himself, Sri Chaitanya Mahaprabhu, became the main trunk of the tree of devotional service. और फिर जो माली है स्वयं चैतन्य महाप्रभु वही उस भक्ति के पेड़ का जो मुख्य शाखा है। So in Kavi Karnapur's Gaur Ganadas Dipika, he says तो गौर करने की दीपिका में कवि कर्णपुर कहते हैं that Ishwara Puri was the principal disciple of Madhavendra Puri. कि ईश्वरपुरी माधवपुरी के मुख्य शिष्य थे। And therefore, through the mercy of Madhavendra Puri, Ishwara Puri carefully understood the mellows of conjugal love of Radha Krishna. और Carefully understood, not whimsically, not cheap. और
और माधुर्यपुरी की कृपा से ईश्वरपुरी ने बड़ी सावधानी से जो राधा कृष्ण लीला का रस है उसको समझा। And then clearly it says that Ishwar Puri was able to distribute that mellows of conjugal love to others without misunderstanding. The fruit of that he distributed. बताया जाता है कि फिर ईश्वरपुरी ने उस माधुर्य रस का वितरण किया बहुत अच्छे से। So if Ishwara Puri is the Kalpa Vriksha tree, the principal one, Srila Madhavendra Puri, thank you. तो माधुर्यपुरी मुख्य कल्प वृक्ष हैं। Because Krishnadas Kaviraj Goswami uses the word Bhakti Kalpa Taru. कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस शब्द का प्रयोग करते हैं भक्ति कल्प वृक्ष। That means he's the desire tree, the Kalpa Vriksha tree of devotional service in Krishna Lila. Madhavendra Puri. इसका अर्थ है कि कृष्ण लीला में माधुर्यपुरी भक्ति के कल्प वृक्ष हैं। Now a tree gives fruits and flowers. एक वृक्ष फल देता है, फूल देता है। So Ishwara Puri is the fruitified form of that desire tree. तो ईश्वरपुरी वो फल स्वरूप है उस कल्प वृक्ष का। That's who he is. He's part of the desire tree of devotional service. इसका अर्थ यह है कि वो उस कल्प वृक्ष के एक भाग है। Ask them, is that okay? महाराज पूछ रहे हैं क्या समझ में आया? सही है। You have any comments or questions you'd like to ask? कोई प्रश्न या एकांत? Yes, Prabhu. If you want to speak in Hindi, he'll translate for me in English. Thank you very much. और प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है, प्रश्न ये है जैसे कि महाराज ने समझाया कि राधा और कृष्ण वर नहीं है, राधा कृष्ण, तो राधा कृष्ण एक ही है। हम लोग जब राधा कृष्ण को वर नहीं रखते, राधा और कृष्ण नहीं बोलते, तो राधा कृष्ण एक ही है। तो मेरा प्रश्न यह है कि बाकी जो रज में बलुत में जो और भी गोपियां हैं, उनमें और कृष्ण में क्या अंतर है या नहीं है? उनमें और कृष्ण में राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। महाराज ने श्लोक भी बताया है 98 का जो श्लोक है, लेकिन बाकी जो गोपियां हैं वो गोपियों में और कृष्ण में क्या अंतर है या नहीं हो जानता। This question is, you explain there is no difference between Radha and Krishna. We say Radha, Krishna, we don't say Radha and Krishna. So, what about the other gopis in Braja? Are they different from Krishna? What's their relation? Ask him which gopi is thinking of. महाराज पूछ रहे हैं कौन सी गोपी के बारे में भी आप सोच रहे हो? सभी गोपियों के बारे में यहाँ पे जो ललिता विशाखा है, उसके बाद जो साधना करने के कृपा सिद्ध होके जो गोपियां बनेगी आगे जाके, सभी के बारे में सोचो। He is thinking about all the gopis. Lalita Vishakha, Sadhana Sita, Kripa Sita. Those will become gopis in future. So yeah, we have Lalita Vishaka with Shishi Radha Giridhari. यहाँ पर ललिता विशाखा है शिष्य राधा गिरिधारी के साथ। So ask him on which side of Radharani and Krishna is Lalita. Ask. तो बात पूछ रहे हैं कि राधा कृष्ण के कौन से तरफ में ललिता सखी है? Right side or left side? दाएं तरफ या बाएं तरफ? जो विशाखा सखी है Lalita. ललिता श्री कृष्ण के पास में। ललिता is close to our next Krishna. Yes. So Srila Rupa Goswami wrote one book called Lalita Madhava. तो रूप गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा है ललित महादेव।
So that's not the Lalita as the gopi. It's Krishna who's called Lalita Madhava, which means naughty or playful Krishna. The word Lalita means naughty or playful. तो वो ललित माधव में जो ललित शब्द का प्रयोग हुआ है वो ललिता सखी या ललिता गोपी के लिए नहीं है, वो कृष्ण के लिए है कि ललित अर्थात कृष्ण नटखट रूप में। But the playful or naughty nature of Srimati Radharani is the form of Lalita. लेकिन जो श्रीमती राधा रानी का पीड़ा करने वाला और नटखट स्वभाव है वो भाव ललिता का स्वरूप है। And that's how Lalita protects Radharani from Krishna's crookedness. और इस प्रकार ललिता सखी श्रीमती राधा रानी को कृष्ण के चालों से बचाते हैं। And the more Lalita protects Radharani from Krishna's crookedness, the more Radharani wants to feel Krishna's crookedness. It's like that. I can't explain it any more than that. तो जितना ज्यादा श्रीमती राधा रानी ललिता देवी श्रीमती राधा रानी को कृष्ण के चालों से छल से बचाना चाहती है, उतना ही ज्यादा राधा रानी उस छल का आस्वादन करना चाहती है। हमारे भोजन बस इतना ही से ज्यादा नहीं हो सकता। So the more you do not want something, the more you want it. That's the simple explanation. मतलब इसका ये इस प्रकार समझाया जा सकता है कि जितना ज्यादा आप किसी चीज को नहीं चाहोगे उतना ज्यादा आप उसको चाहोगे। Now the form of Vishaka is Radharani correcting Krishna. Vishaka is next to Radharani on the left. So the form of Vishaka is Radharani correcting Krishna. विशाखा इसके लिए राधा रानी के निकट है, तो विशाखा इसका स्वरूप है राधा रानी का कृष्ण को सुधारने का भाव। So what Radharani wants to do with Krishna, but doesn't want to do it directly, she does it through expansions. Radha, Vishaka and Lalita. तो राधा रानी भगवान कृष्ण के साथ करना चाहती है, लेकिन खुद नहीं करना चाहती, अपने विस्तार के द्वारा करती है, विशाखा के द्वारा ललिता। So Srila Krishnadas Kaviraj Goswami in Chaitanya Charitamrita, which is full of rasa, Chaitanya Charitamrita, he gives an analogy in this regard. चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये ग्रंथ जो पूरे रस से भरा हुआ है उसको समझाने के लिए। So the analogy is that Krishna is the trunk of the tree. तो उपमा ये है कि भगवान श्री कृष्ण वृक्ष की मूल शाखा हैं And Radharani is the creeper that twines around the trunk of the tree. और Creeper. और श्रीमती राधा रानी वो लता है जो उस वृक्ष की मूल शाखा के चारों तरफ घूमकर आ रही है। And Lalita and Vishaka and the other Sakis are like the flowers and the leaves of that creeper. और ललिता विशाखा जैसी जो सखियां हैं वो उस लता में जो फूल हैं पत्तियां हैं। So these things cannot be understood. तो इन चीजों को नहीं समझा जा सकता। It can be having a feeling only. ये केवल इसका आस्वादन है And the word feeling is called bhava. और जो आस्वादन है इसको भाव है। And when you feel something, then you become emotional. तो जब आप कोई चीज का आस्वादन करते हैं तो आप में भावनाएं आ जाती हैं। So bhava has two features. One is feeling, and when you feel, then you express your emotion, which is the fruit of bhava. तो भाव के दो अंग हैं, एक है उसका आस्वादन करना, फिर आप वो भावों को प्रकट करना चाहते हो। So Radharani's feelings are expressed to the form of Vishaka on one side and Lalita on the other side in relation to Krishna. तो राधा रानी की जो भावनाएं हैं उनको वो इस प्रकार प्रस्तुत करती हैं, एक तरफ विशाखा और दूसरी तरफ ललिता। Ask him, okay? बात कुछ है नहीं है। Yeah. Tell him that if he remains brahmachari, he'll realize this. बात बोले अगर
Ask him if he wants to remain brahmachari. महाराज मुझसे क्या ब्रह्मचारी रहना चाहते हो? हरे कृष्ण महाराज जी, आप आशीर्वाद दीजिए। हाँ, मैं रहना चाहता Tell हूँ। him my blessing. महाराज बोले हाँ आपकी आशीर्वाद। थैंक यू। Because ultimately also the grihasthas have to become brahmachari. क्योंकि मुख्य रूप में देखा जाए तो गृहस्थों को भी ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा। And the beginning stages of brahmacharis for grihastha is called vanaprastha. और गृहस्थों का Everyone has to come like that eventually. और जो गृहस्थों का ब्रह्मचारी बनने का प्रथम चरण है उसको वानप्रस्थ कहते हैं। तो सबको इस स्तर पर आना होगा। Next question. You have question? Okay. I say in English first. Yeah, English first. Thank you, Maharaj, for a beautiful explanation. So, we understand that the mood of conjugal love is best. The mode of conjugal love cannot be understood. So you cannot use the word understand. So, we hear that the mood of conjugal love is best expressed in the form of a gopi or a manjari. No. Radharani expresses certain feelings and emotions through the form of the other gopis to Krishna. That's why it cannot be understood and explained. Now say in Hindi. मेरा प्रश्न ये था कि हम ऐसा सुनते हैं कि माधुर्य रस का सबसे अनोखा प्रस्तुतिकरण गोपी के स्वरूप में या मंजरी के स्वरूप में होता है। तो महाराज ने कहा कि श्रीमती राधा रानी का जो भाव है वो गोपी और मंजरी के स्वरूप में प्रकट होता है। Now, to give you a nice example, okay, is there any father here with children sitting here today? Like father is here and children? Anyone? I said Hindi. Ask. यहाँ पे कोई पिता है जिसके बच्चे हैं? Huh? No, are the children here? No, any father with children here? जिसका बच्चा यहाँ पर? Any mother with children? माँ है जिसका बच्चा यहाँ पर? Okay, any brothers and sisters or sisters are here? Two? या फिर भाई बहन यहाँ पर? Sisters. Stand up. Up. She is introducing herself. Okay. So you all are two sisters. आप दोनों बहन हैं And you have one father. और आप एक पिता हैं। Father may be still there or Gangamai पिताजी हैं या has gone. Okay. So now, what's the names? नाम क्या है? Spiritual name. लवंग सुंदरी Lavanga Sundari Mataji and Vanmali. बनमाली की चिंता। Vanmali Chitra. Okay. So now, you ask her in Hindi that she has affection and love for her father. Ask. आपको अपने पिता से प्रेम और स्नेह है? So tell her to show how much. Explain how much. So much, so much. Explain. तो महाराज समझाओ कितना? She's saying that love is a feeling words cannot describe. Yes. You cannot understand it and cannot describe it. Correct? तो महाराज बोले तो सही बात है कि आप उसकी व्याख्या भी नहीं कर सकते उसको समझ भी नहीं। No, Vanmali. So you also have affection and love for the same father. One father, two daughters, right? Yeah. Can you express how much love and affection you have for your father? तो महाराज जी आप भी उसी पिता की पुत्री हो
तो आपको जो प्रेम और स्नेह है क्या आप समझा सकते हो, व्याख्या कर सकते हो? Can you explain it? Yes. वो बोलिए, मैं शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता। But they are both daughters of one father. लेकिन वो ये दोनों एक ही पिता की पुत्रियां हैं। Now let me ask her again. Mataji, can you feel how she can feel for your father? माता जी, क्या जो उनका पिता का प्रेम है उसको आप आस्वादन कर पाए, उसको समझ पाते हैं, जो उनको अपने पिता Yes or no? No. वो बोले नहीं। Same father, two daughters. They both have very deeply individual feelings and love for the father. And she cannot feel her love for the father, and she cannot feel her love for the father. But they can see, they can understand, but they cannot feel, cannot explain. तो एक ही पिता की दो पुत्रियां हैं, दोनों पिता से प्रेम करती हैं, तो वो एक दूसरे के प्रेम को देख सकती हैं, सुन सकती हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रेम को जो पिता है उसका अनुभव नहीं कर सकती, Because it is deeply individual. क्योंकि वो व्यक्ति तक सीमित है। And it is confidential by its own nature. It cannot be explained or understood. और वो अपने स्वभाव से गुह्य है, उसको समझाया नहीं जा सकता और समझा भी नहीं जा सकता। And you cannot be competitive and comparative about it. You cannot compare, say, I love more than the other. It's not. It's individual, it's deep, और आप it's unique. और आप तुलना भी नहीं कर सकते कि मेरा प्रेम तुम्हारे प्रेम से ज्यादा है, ऐसा नहीं है। If this is like this between themselves as sisters and daughters of one father, how much more is it with Radha Krishna individually for all of us? तो जब यहाँ पर एक पिता के प्रति दो पुत्रियों का इस प्रकार प्रेम का अनुभव होता है, तो राधा कृष्ण के प्रति व्यक्तिगत रूप से सभी का इस प्रकार होगा। So our love for Radha Krishna and our service to them and service to the devotees is very uniquely, deeply individual. You cannot compare it to somebody else. तो राधा कृष्ण के प्रति हमारा जो प्रेम है, उनके प्रति सेवा है, उनके भक्तों के प्रति सेवा है, वो सबका अलग अलग है, एक का दूसरे से तुलना नहीं किया जा सकता। And you cannot explain it to somebody else. और आप दूसरे को समझा भी नहीं सकते। If you explain it, and it is not that, it is not that love, because it is not Guyatama, it's no more confidential. और अगर आप उसकी व्याख्या कर सकते हो, समझा सकते हो, तो फिर वो गुह्य नहीं रहता है। Does that answer your question? Yes. महाराज से क्या आपको You can sit. Thank you. मैंने कहा शायद मिला। So how can we explain and understand something that is uniquely individual in your relationship with Radha Krishna and in your relationship with other devotees, in relationship to Radha Krishna? Cannot be explained. जैसे हम जो राधा कृष्ण के साथ में किसी जीव का संबंध है, किसी भक्त का संबंध है, तो हम उसको कैसे समझ सकते हैं और समझा सकते हैं? And if it's exposed, then it becomes cheap. और फिर जब हम उसको प्रकट कर देते हैं, तो फिर वो उसका मूल्य चला जाता है। Then it becomes of no more value to you because it's cheap. फिर उसका मूल्य नहीं रहता क्योंकि अब आपको पता चला। But if love for Radha Krishna is deeply individual and unique and not shared with others, that's called by its own nature confidential. तो जो राधा कृष्ण के प्रति प्रेम है, जो सभी चीज के लिए उसका विशेष अनुभव है, उसको बताया नहीं जा सकता, तभी वो कोई है। And that is called japa. और उसी को जपन है। Kirtan is when all the children are with the mother and father. Kirtan is when all the children are together with the mother and father. कीर्तन वो होता है जब माता पिता के साथ में सारे बच्चे मिलकर करते हैं। But japa means when you, the only child, are with the mother and father. और जपा वो है जो माता पिता के प्रति किसी एक बच्चे का
That's how confidential it is. वो कोई नहीं। That's how intimate it is. देखा? Kirtan is public display. Japa is intimate, not it's personal. तो इस प्रकार जो कीर्तन है वो एक जन समाज में किया हुआ प्रस्तुतिकरण है और जो जपा है वो व्यक्तिगत है। So we stop now. तो क्या हम यहाँ पर समाप्त कर सकते हैं? आज के दिन No, we have to stop. नहीं हमें समाप्त करना है। Because everyone's hungry. Breakfast. सबको प्रसाद चाहिए। Srila Prabhupada ki. Sripad Madhavendra Puri Pad ki. Srila Ishwar Puri ki. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki. Jai Go Premanande. हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हमारा परम सौभाग्य है कि महाराज स्वामी महाराज ने आज के पावन दिवस के ऊपर मेरे कुछ बातों को बहुत गंभीरता से और सरलता से वर्णन किया। ये सब जो बातें हैं श्रवण किया, ऐसे पुस्तक पढ़ने से प्राप्त नहीं होता, इसके ऊपर बहुत मनन किया। अनेकों सालों का मनन है, अनेकों सालों का उसके ऊपर गहराई से अध्ययन है, तभी इसका जो अमृत का जो सार है हमारे आगे प्रस्तुत किया है। हमारा सौभाग्य है कि महाराज जी भी गौर पूर्णिमा का जो सुबह का प्रवचन है वो महाराज के द्वारा आप सब गौर पूर्णिमा प्रस्तुत है और हरे कृष्ण।